प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, मेरा ख्याल है कि पिछले 2-2.5 महीने में जिन डॉक्टर्स को हमने सबसे ज्यादा टीवी पे जो है वो कोविड को के बारे में बात करते देखा है, उसमें जावेद अकरम साहब जो हैं वो बहुत नुमाया थे, एंड वी हैव लर्न फ्रॉम हिम. Javed Akram Sahib is the Vice Chancellor of University of Health Sciences and the President of Pakistan Society of Internal Medicine. So, Dr. Sahab, agar in 3 minutes, a basic introduction, and then we'll move to questions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and belated Eid Mubarak to all my brothers. Of course, we are a family, and Amir is just like a brother to me. And thank you so much for giving this opportunity. As you know, University of Health Sciences, I joined only not even 1.5 years only. Before that, I was Vice Chancellor at Shahid Zulfikar Ali Bhutto, founding Vice Chancellor and PIMS CEO for 4 years tenure. When I joined this university, this was totally involved in affiliations and examinations. But at that time, the vision was to make it patient-centric rather than just student-centric. So to some extent, we were able to do that. We were able to bring in many, many new programs. And on one side, when this pandemic came in, obviously we indulged ourselves into innovations and cost-effective innovations for our own society. So we, adopted many what we call orphan drugs like hydroxychloroquine. The problem with hydroxychloroquine is, unfortunately, it's very, very inexpensive, so no money for anybody. So that is why that is being bombarded right, left, and center. So we tried to test it in a very large scale study, the largest in the world, called PROTECT trial. PROTECT, I am the PI, principal investigator, and PROTECT stands for Pakistani, P obviously, Pakistan Randomized Outcome Clinical Trial in Coronavirus Treatment. And then also within the education, there were a lot of innovations were required. So we started with health informatics degree program, in which one component is telemedicine, and the other component is HMIS, another component is public health informatics, and then epidemiological things, which will interest Amir more than General Amir more than anybody else. And I'm very pleased and proud that he's on our faculty in that program as well. And the last module is where they work in the hospitals, which are IT enabled. So already the enrollment is there, everything is there. So that was innovation on the side of service delivery. And we have now 29 telemedicine centers working around the clock because UPDs were closed down. So there was a need apart from Corona also. And we were looking at mildly ill or asymptomatic patients on one side and doing a lot of studies in that. On the other side, seriously ill. We are testing many interleukin-6 inhibitors. We are also doing plasma therapy. We are probably the only university doing it. And we are now indulging ourselves into IgG. We are driving IgG out of ये मैं आपसे सवाल और उसको भी देख रहे हैं और फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में जी बिल्कुल. मैं इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आंसर रोका है, बिकॉज ये सवाल आगे आएंगे तो उसमें प्लीज आप इलैबोरेट कीजिएगा इन तमाम चीजों को. बट थैंक यू फॉर द बेसिक रन डाउन. बहुत शुक्रिया. जरूर. आई मूव टू प्रोफेसर जावेद अकरम साहब. और डॉक्टर साहब, आप यू आर नोन एज अ रिसर्चर. माशाल्लाह, जब पाकिस्तान में हेल्थ रिसर्च की बात होती है तो जो चंद अफराद जिनका नाम आता है उनमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सर फहरिस्त होते हैं. तो मैंने यही सोचा कि, और चूंकि ये हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड का वेबिनार है और हम फोकस ज्यादा रिसर्च पे करना चाहते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट और हमारे जो फिजिशियंस हैं, क्लिनिशियंस हैं या रिसर्चर्स हैं, डिड वी ऑल अप्रोच द कोविड-19 विद अ रिसर्च पर्सपेक्टिव, और वी वाज जस्ट हम सिर्फ रिएक्टिव थे कि जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग में फोकस था? तो वो हमारा, मैं चाहता हूँ उस पर आप थोड़ा सा कमेंट करें. और दूसरा ये कि हम किन एरियाज पे रिसर्च कर सकते थे अगर 3 महीने पहले हमें पता चल गया था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और हमें पता था कि ये जो है 6 महीने या मे बी लॉन्गर, एंड दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड. मेरा ख्याल है कि इंसान की तारीख में, इंसानियत ने कभी हमें ये पूरी दुनिया कभी लॉकडाउन में गई नहीं कभी. तो कौन से रिसर्च इनिशिएटिव हो सकते थे जो हमें करने चाहिए थे पाकिस्तान में और हमने नहीं किए? उसके गैप के बारे में थोड़ा सा बताइएगा. और ऑब्वियसली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसको आपने हल्का सा मेंशन किया,
जो कि इस वक्त तमाम अभी भी ऑल्दो कुछ जो स्टडीज है उनको रोक दिया गया है, लेकिन इसमें अभी तक मिला जुला रुझान है, क्लैरिटी नहीं है। सो आई वुड वांट यू, क्योंकि आप उसका ट्रायल भी रन कर रहे हैं, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इज द, यू आर द प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर फॉर दैट आल्सो। सो ये 3-4 सवाल अगर आप काइंडली इस पे एलैबोरेट करें इन 5 मिनट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच अगेन। देखें, जो आपका पहला सवाल था वो उसका मैं ये जवाब दूंगा कि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी लैब है कि जो इस वक्त रिसर्च कोविड-19 पे नहीं कर रही। Every virologist, every microbiologist, every physician is indulged in that research. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वी आर द क्लिनिशियंस आर ओवरवेल्म्ड विद द बर्डन ऑफ द डिजीज़। तो इसलिए उनके पास इतना बहुत मुश्किल है कि टाइम हो कि वो कोई रिसर्च में जाएं। हमारे जो हमने शुरू तो की इनफैक्ट वायरस की इटसेल्फ से कि उसकी म्यूटेशंस देखने से, कि वुहान का स्ट्रेन और इटालियन स्ट्रेन और जो ईरानियन स्ट्रेन है उसको होते लाते हमारे पास कैसे आए। तो उसके लिए हमने एक बहुत आसान काम किया कि UHS का अपना एक म्यूटेशन ब्राउज़र है, वो हमने लॉन्च कर दिया। वो गूगल पे आप कर सकते हैं सर्च, तो उसको अगर आप डाउनलोड कर लें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें तमाम हम 6 बजे शाम को डाटा अपलोड करते हैं जो हमें तमाम दुनिया की सोर्सेज से आता है। और ये सिर्फ फिल्टर्स लगाए हुए हैं, तो दिस इज़ ओनली हाई क्लास डाटा कि स्किप्स जिनमें 3 या 4 स्किप्स सीक्वेंसिंग में कम, 3 से कम हो, तो उनको हम अपलोड फिल्टर्स के ज़रिए करके, तो उसमें KPK का भी स्ट्रेन है, GB का भी स्ट्रेन है, पाकिस्तान के भी स्ट्रेन हमें पता लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली द एनालिसिस के 39,000 के करीब इस वायरस की म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं। जो म्यूटेशंस अभी तक देखी गई हैं वो मैक्सिमम 19 के करीब देखी गई हैं। तो एक्चुअली मोर और लेस द वायरस इज स्टेबल, इट इज़ नॉट म्यूटेटिंग वेरी रैपिडली, despite this virus does multiply quite rapidly in the body. But outside the body, the worst thing is it survives on different surfaces, in air, metal, plastic, rubber. It can survive for hours or even days. Even on paper, it can survive. So हमारी एक तो वायरस की थी, दूसरी हमने होस्ट रिस्पॉन्स पे काफ़ी काम किया कि जो होस्ट रिस्पॉन्स इज़ मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब हमें समझ लग गई कि वायरस तो इतनी नहीं बदली इधर आते हुए, तो होस्ट रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क है। हमारे होस्ट रिस्पॉन्स में यूरोपियन या ईरानियन या चाइनीज़ होस्ट रिस्पॉन्स में, उसमें हमने बहुत सारी कोलैबोरेशन डेवलप की। एक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया मेडिकल अलायंस डेवलप की, जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की। इस वक्त वो चेयर शंघाई यूनिवर्सिटी के पास है, लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर वो हमारे पास आ जाएगी। उस प्लेटफॉर्म को हमने यूज़ किया फॉर रिसर्च। तो कोलैबोरेशन वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लर्निंग फ्रॉम चाइनीज़ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में उस अलायंस में अभी तक सिर्फ हम ही हैं। तो बाकी श्रीलंका है, और रीजनल डाटा हम काफ़ी इकट्ठा कर रहे हैं। और रीजनल डाटा में जो हमें समझ लगी है कि हमारे केस फर्टेलिटी रेट अगर आप पर मिलियन लें तो वो अराउंड 4 के करीब हम पहुंच गए हैं। इंडिया खड़ा है 3.5 पे, श्रीलंका इस वक्त इज़ द बेस्ट 0.75 पे, और जो बांग्लादेश है ये हमने उन यूनिवर्सिटी से ही फिगर्स लेके डेवलप किया है, डायग्राम उसका कोई 1.5 है। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली जो मोर्टेलिटी है अभी रिसेंटली थोड़ी सी और भी इंक्रीज़ कर रही है। तो इसके अलावा हमने बहुत सारे ड्रग ट्रायल्स, जैसे आपको पता है प्रोटेक्ट ट्रायल है, ये 9,500 पेशेंट्स का ट्रायल है, फुली अप्रूव्ड WHO INTL पे 202 इसका वो है। कितने सेंटर्स आपके साथ एसोसिएटेड है? 29 सेंटर्स हैं, मेनली यूनिवर्सिटीज़ हैं, पिम्स भी है और इस्लामाबाद भी है, और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये तमाम GCP के तहत हो रहा है। इसमें एक आर्म है जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है BD डोज पे, और एक में एजिथ्रोमाइसिन है, और एक में ऑसिलिटावर है। जो कहा जा रहा है रेमडेसिविर के उसका शायद कोई इफेक्ट होगा, ये उसका ओरल वर्जन है। इस एंटीवायरल एंटी न्यूक्लियोसाइड ड्रग जिसको हम टेमीफ्लू के नाम से जानते हैं। चौथे में ऑसिलिटा प्लस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पांचवें में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रो कॉम्बिनेशन, एंड जो 6th आर्म है वो प्लेसिबो आर्म है। तो इससे पैरेलल स्टडी, और अभी वी आर इनटू 6 वीक्स ऑफ दिस स्टडी। तो अभी इसको हमने पॉज किया जैसे ही सॉलिडेरिटी WHO ने किया। अब WHO का मेरा अनफॉर्चुनेटली इख्तलाफ उनके साथ ये है कि व्हाट डाटा दे हैव कि
the adverse effects are there. FDA is going on with its recommendation. CDC is going on, and their president is taking himself. He told in press conference that as a prophylactic drug, at his age with his problems, he is taking it without any side effect. या तो कोई एविडेंस बेस पे वो रोकते, पॉज देते, उन्होंने कहा पॉज फॉर एक्स्ट्रा कॉशियसनेस. मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस कि WHO and many authorities are under influence of multinationals who want to sell their expensive drugs like interleukin-6 inhibitors. उनका कोई हमारे पास डाटा नहीं है और हम उसको अप्रूव कर रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस बेस्ड. एक्सपीरियंस जरूर है, मेरा भी है, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर में. एक जापान का हम ट्रायल कर रहे हैं, एविगैन का, ठीक है. इस वक्त जापान के 100 पेशेंट्स का जापानीज गवर्नमेंट सेलेक्टेड अस एंड इट्स वेरी काइंड ऑफ देम, दे सेलेक्टेड अस. इसी तरह हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ 2 इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा ड्रग्स पे कर रहे हैं. लेकिन अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है. जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में भी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वी कैन टेल यू कि हमने भी उसको पॉज किया 72 आवर्स के लिए और हमने अपने पूरे ADRs को देखा, रिव्यू किया, डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड की डेली मीटिंग कराई हमने, और एक भी इस तरह का कोई भी कार्डियक डिफेक्ट नहीं आया. And remember कि hydroxychloroquine in very high doses, 4 times the doses we are using in rheumatoid arthritis, and we have been using in many other indications including malaria. And हमने पॉज किया है, ये अब तक कितने पेशेंट्स आप रिक्रूट कर चुके थे उसके ऊपर? अभी हम कोई 900 प्लस कर चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट इज वेरी एम्बिशियस 6500. ये जो भी आपने जो अब जो इस वक्त जो आप इसको रिव्यू कर रहे हैं वो 900 पेशेंट्स पे रिव्यू कर रहे हैं? जी, उनके डाटा को सेफ्टी डाटा, रोबस्ट सेफ्टी डाटा. हमारा जो मेन एंड पॉइंट है, देयर आर मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, अदर थिंग्स, साइड इफेक्ट, टॉलरेंस, मगर मेन एंड पॉइंट है कि ये सब RT-PCR पॉजिटिव हैं और हम डेली इनका RT-PCR करते हैं ये देखने के लिए कि किस रेजिमेन पे सबसे पहले नेगेटिव होता है, कि विच रेजिमेन इज एंटीवायरल एक्टिविटी. और इसी तरह प्लाज्मा का हम ट्रायल कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा अब IgG का कर रहे हैं प्लाज्मा से ड्राइव, और अब हम सिंथेटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ड्राइव फ्रॉम ह्यूमन हाइब्रिडोमा. So there are many trials, about 29 trials that we are indulged in. On the other side, being a university, we have also done a lot of education reforms which were required. Not only medical education online हमने कर दी अपने तमाम 92 colleges, because we are University of Punjab, AJK and Balochistan. तो हमने तीनों जगह पे ये किया. अभी जो अफिलिएशन है वो हम स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कन्वेंशनल साइड पे. तो इस तरह हमने एजुकेशन में भी बहुत चीजें की और नई डिग्री प्रोग्राम्स भी बहुत किए. But I think that जो आपने जो रिसर्च का अपना जो दिया रन डाउन, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली इतनी ज्यादा ट्रायल्स और एक्टिविटीज जो हैं वो पाकिस्तान में शायद कोई और सेंटर, शायद, एंड आई मे बी रॉन्ग, जो है वो ना हो रहे हो. एंड दैट्स व्हाई यू नो वी वांटेड टू इनवाइट यू, because from a health research perspective, you know, we realized कि आपका इसमें बहुत काम है, और and I'm sure कि हमारी audience has learned a lot. They are more educated, and we would want to learn, you know, more details about these trials and studies. Moving to Professor Javed Akram Sahab, Dr. Sahab, herd immunity, probably इस वक्त हम और स्वीडन के हवाले से, you know, we hear a lot कि स्वीडन का मॉडल अच्छा है या है कि we'll come to know. तो एक तो है कि I would want you to comment for our audience कि आपका टेक हर्ड इम्यूनिटी पे क्या है, क्या हर्ड इम्यूनिटी जो है की तरफ जाना चाहिए, क्या हर्ड इम्यूनिटी 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन प्रोबेबली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब इन्फेक्ट हो जाती है तो में भी हम कह सकते हैं. पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में उसको आप कैसे देखते हैं, एक. और दूसरा ये जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट, and I know कि आप भी उसका एक ट्रायल का सेंटर है, ताहिर शमसी जो है वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर हैं, उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी जो है रोशनी डालें. और तीसरी चीज, अगेन इफ यू कैन यू नो आंसर विद इन 5 minutes, क्योंकि हम टाइम मैनेज भी कर रहे हैं, कि हम कैसे अपने फिजिशियंस को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो है वो मीनिंगफुल ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए डेवलप और प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली इन द वेक ऑफ अ पेंडेमिक, or learning from it and then for the future. So please. Thank you. पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा अपना इम्प्रेशन ये है कि हर्ड इम्यूनिटी इज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान.
Pakistan potentially is going to be the third largest country in the world in about 20 years from now. तो इतनी बड़े मुल्क में 22 करोड़ के लोगों में जब आप 70% लोगों को, कोई भी किसी भी मुल्क ने जानबूझ के इन्फेक्ट नहीं कराया, इन्फेस्ट नहीं कराया अपनी पॉपुलेशन को, वो हो जाती है ओवर द टाइम, एंड एवरेज इट टेक्स अबाउट 2 to 3 years. और जब 70% आपका होता है, और मोर्टेलिटी अभी मैंने आपसे शेयर की थी 2.2%, अगर आप केस फर्टेलिटी रेट लगाएं तो आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी. सेकंड ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि इम्यूनिटी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है. मे बी इट इज नॉट लास्टिंग बियॉन्ड फ्यू मंथ्स. So what are we going to achieve out of it? What we have seen कि हमने जो आपने IgG IgM के एसएस की बात की, बिल्कुल आई एग्री विद आमिर जो उन्होंने कहा, लेकिन इसकी एक जो यूटिलाइजेशन जो उन्होंने भी इशारा किया वो ये है कि जो हम प्लाज्मा लेते हैं तो उसकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पता होनी चाहिए कि डोनर में है कितनी. तो हमने इसको अलाइजा बेस्ड 3rd जनरेशन ऐसे डेवलप किया है, और उस ऐसे में हम देख रहे हैं, वी आर सरप्राइज्ड कि आफ्टर 2 weeks द IgG इज हार्डली डिटेक्टेबल. So I don't think कि इस वक्त there is enough evidence even to consider herd immunity. It's fine for politicians to talk about it. It's fine for our judges who should be wearing white coats rather than black coats to talk about it. But it's only up to them. But as बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि कोई evidence based चीज हो ही नहीं रही. Everybody thinks कि he is the master of all trades. तो ये गेम है, लेकिन उस तरफ तो हमें जाना नहीं चाहिए. आपका जो सेकंड क्वेश्चन था दोबारा जरा कह देंगे थोड़ी. सर उसमें मैं ये एक तो है जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट और यू वन ऑफ द सेक्टर्स. प्लाज्मा देखें, प्लाज्मा कोई नई थेरेपी तो नहीं है. वी वर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर जीबी सिंड्रोम, गिलन-बेरी सिंड्रोम, फॉर एक्यूट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फॉर वेगनर्स ग्रैनुलोमा. बहुत सारी चीजों में हम वी हैव इयर्स और डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लाज्मा. मास्थीनिया ग्रेविस में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है. तो इसमें तो कोई नई चीज नहीं है. इससे पैसिव इम्यूनिटी, एंड अगेन important thing is we check the quality and quantity of the antibodies that we are going to give it to the recipient. Otherwise there is no point just taking the plasma. तो अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है, I don't know how many patients have been. अच्छा है, लेकिन हमने कोई evaluate नहीं किया. हमने कोई पहले कोई 24 के करीब केसेस किए हैं. ताहिर शमसी ने भी इतने किए हैं, and we are one group. I am his co-PI and he is my co-PI in some studies. So we are one research group. तो वो इसमें डेफिनेटली जो टाइम टू वेंटिलेटर है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेटर, बट अगेन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज द प्रॉब्लम विद द साइटोकाइन स्टॉर्म इज इट्स नॉट सेम इन एवरीबॉडी. पोस्ट रिस्पॉन्स का हमारे में बहुत फर्क है, और हम एक बहुत अच्छा टूल डिवाइस कर रहे हैं जिसमें हम म्यूटेशंस डिवाइस कर रहे हैं in those people who are going into cytokine storm. We think that these people, because age is not a bar, young people are going in cytokine storm and requiring assisted high flow oxygen and then assisted ventilation. So उस genetic panel की base पे हम ये देख रहे हैं कि क्या we can predict that these are the people who are going to go, because it is not the virus, it is not the dose of the virus, it is not because ACE inhibitors, we know कि ACE inhibitors या ARBs we have been using for ages and they are protective, because this virus attaches to ACE receptors in the bronchial tree and the alveolar tract. तो प्रॉब्लम इज के एस रिसेप्टर्स किन में बड़े होते हैं? हाइपरटेंसिव में बड़े होते हैं. वी नो इट, दे आर मोर एज के साथ बढ़ते हैं, डायबिटिक्स में बढ़ते हैं, हार्ट फेलियर में बड़े होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे ड्राइव द मोर्टेलिटी. सो वी नो दैट, बट वी आल्सो थिंक दैट देयर इज अ जेनेटिक फैक्टर टू इट, कि जिनके एस रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं जेनेटिकली, एंड वी आर ट्राइंग टू इन आवर पॉपुलेशन, बिकॉज दैट विल बी वैलिड ओनली इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन एंड नॉट एवरीवेयर. And your third question, sorry, again, can you repeat the third question? वो मैं चाह रहा था कि again very briefly कि how can we prepare our healthcare professionals for translational research, maybe for future pandemics? Right. President Alvi साहब आए हमारे यूनिवर्सिटी, जब उन्होंने सुना बहुत कि ये स्टडी का काफी काम कर रहे हैं, तो वो आए. It was very kind of him. तो उनके सामने हमने 2 MOUs किए. देखें हमारे पास इस वक्त 29 पेटेंट्स हैं मेरे अपने नाम पे या मेरी यूनिवर्सिटी के नाम पे, which is obviously an asset. But believe me, at this level, I am not interested in my patents. I am not interested in my CV. I am not interested in the impact factor that my university, and I am not interested in the impact factor of my journal, Biomedica, जिसका हम एक पूरे का पूरा supplement छाप रहे हैं COVID-19 पे. तो इसमें I am interested in the impact, not the impact factor. और वो किस तरह होगा impact?
इम्पैक्ट आएगा ट्रांसलेशनल रिसर्च से। मैंने उनको सजा के रखा हुआ है उन पेटेंट्स को। आई हैव नॉट बीन एबल टू कमर्शियलाइज नॉट ए सिंगल वन ऑफ देम। आई हैव बीन टू जेल्स फॉर दोज ट्राइंग टू कमर्शियलाइज। You know, the multinational mafia, they are going to block you. The import mafia is going to block you because they are mostly biotechnology products. And you know, there is a huge resistance when there is a $40 billion import of these products. तो इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट, तो हमने अब ये किया कि हमने 3 कंपनीज जो मेजर कंपनीज है पाकिस्तानी, उनको इनवाइट किया प्रेसिडेंट साहब के सामने। उनके सामने हमने एमओयू किया कि हम बायोटेक पार्क वो बनाएंगे हमारे कैंपस पे, और हम इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च करेंगे। So you know, this is one of the things that Amir also referred to, converting crisis into opportunities. That हमारे लिए बहुत important हुआ कि, और प्रेसिडेंट साहब ने उसको स्पॉन्सर किया। तो प्रेसिडेंट साहब की अगर वो स्पीच सुने, उन्होंने कहा ये मेरी ड्रीम थी विच इज कमिंग ट्रू। तो 3 कंपनीज ने, नेशनल कंपनीज ने हमसे कंसोर्शियम बना के साइन ऑफ किया है। नाउ द वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो वेरी सून वी विल बी डूइंग डिजाइनर रिसर्च ऑन देयर डिमांड which they will agree to translate it into commercialization. I think inshallah, you know, when we do the next webinar, so we would like to follow, because this is a great initiative, and congratulations, and Allah Ta'ala isme barakat bhi dale aur kamyabi bhi ho isme inshallah. I think that's something which will build the ecosystem of health in Pakistan, research in Pakistan. जबकि देखें, मैं बीइंग ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ये समझता हूँ कि ना तो ये वायरस अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आई है और ना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जाएगी। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट इंशाल्लाह देयर इज़ ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड वी शुड बी वेरी वेरी होपफुल दैट समथिंग बेटर विल evolve out of this. I think a better lifestyle, a better environment, less pollution, and people will be now very very careful in their actions, whatever they do. For the time being, I think till we are struggling to, because इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी मोर्टेलिटी चाहे हो गई है, बहुत मोर्टेलिटी है, एक जान का जाना भी बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हम मरीज किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ से साल में मर जाते हैं। तो अगर आप कलेक्टिव मोर्टेलिटी लें, या इवन फ्लू से भी इतनी डेथ्स हो जाती हैं, इससे तकरीबन इतनी हो जाती हैं वर्ल्ड ओवर ग्लोबली। प्रॉब्लम, इसका खौफ इसलिए है कि इस वक्त हमें ये नहीं पता कि इसका इलाज क्या है, और ये नहीं पता कि इसकी वैक्सीन नहीं है। तो ये जो 2 चीज़ें हमें पता चल जाएंगी तो आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। जैसे फ्लू है, जैसे टाइफाइड है, जैसे मलेरिया है, जैसे व्हाटएवर, तो वो फियर ख़त्म हो जाएगा। बट आई थिंक वी मस्ट एज मुस्लिम्स, we must put all the trust in Almighty Allah, and remember whatever we are doing, we must look upon Almighty Allah for the answer, and we must keep on praying, and inshallah very soon you will see it will be much better for all of us. Inshallah. बहुत शुक्रिया आपका टेक होम। आई थिंक इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, स्पेशली व्हेन वी ऑल नो, और हम सब ने एग्री किया है कि द साइंस इज चेंजिंग। सो अगेन ये पर्सपेक्टिव जो आपने दिया है, एंड आई एम थैंकफुल कि आपने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, क्योंकि आई थिंक वी ऑल अग्री दैट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सिटी और कंट्रीज, यूएस, यूके, फ्रांस, जो हैं, जो असबाब की दुनिया के चैंपियन हैं, और हम भी असबाब को फॉलो करते हैं, वहां पर मेरा ख्याल है कि हम सब ने, एंड वी ऑल हैव बिकम हम्बल, आई थिंक आई वुड से दैट, कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको ये दोबारा से एहसास दिलाया कि एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, ही इज द अल्टीमेट, यू नो, प्लानर एंड कंट्रोलर। और तो जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की, बीइंग अ साइंटिस्ट एज वेल, आपकी बात बहुत पावरफुल है।